लड़कियों को भी मैं सेम ही मैसेज देना चाहूँगी कि उनको भी एक्टिव रहना चाहिए, उनको भी फिजिकली फिट रहना चाहिए। इस मैराथन का थीम है कि स्ट्राइड फॉर आपका सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड क्लीन तवांग, ग्रीन तवांग। Today I think I will secure in the first position of the 50 plus. I'm from Meghalaya Police. Congratulate all of them for just having participated regardless of whether they come first or second or podium finish or whatever. एक्टिव रहना ज़रूरी है आजकल। बेकार का ड्रग्स लेके अपने हेल्थ को नुकसान पहुंचाने से कुछ अच्छा तो होता नहीं है। It's very beautiful, and after 2 kilometer, very top feels high. कि अगर आप हर साल करेंगे तो जनरेशन को बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। With regard to the first edition, 3,000 था हमारा participants ना, and this time we are to 6,000. जी जी। तो Besides tourism, it has also promoted the spirit of sportsmanship. Both the countries, both the forces are committed to maintaining the protocols and abiding by the agreements that पहली लाइन के पीछे जल्दी प्लीज। ओए कैमरामैन। थोड़ा सा चलने जा रहे हैं।
42 kilometer wale participants, please come quickly. We are going to start the race in the next 9 minutes. So participants to come up very quickly. Over there we are going to start in the next 8 minutes. Quickly, please. Kilometers run. जोरदार तालियों के साथ हमारे पार्टिसिपेंट्स का आप स्वागत करें। बहुत बढ़िया तरीके से 2 मिनट थोड़ा पीछे चलिए सर, थोड़ा पीछे चलिए, ठीक है ना, भीड़ है। और पीछे और पीछे और पीछे। हमारे सभी पार्टिसिपेंट्स यही संदेश दे रहे हैं, मैं फिट तो मेरा देश फिट। और ये देखिए हमारे सभी धावक फिनिश लाइन पार कर साइड हो जाए, क्योंकि अभी भीड़ आ रही है, उस वजह से हमें थोड़ा सा स्पेस छोड़ना पड़ेगा। और थोड़ा सा इधर हो जाइए। हमारे सभी पार्टिसिपेंट्स ऊर्जा और उमंग के साथ आगे बढ़ते हुए हर चेहरे पर Yeah, I just want to congratulate all of them for just having participated, regardless of whether they come first or second or podium finish or whatever. Just the fact that they have come all the way to participate in such a high altitude place and such a remote location is very commendable. So I would like to congratulate all the participants. Season has just started for Tawang, so it's hard to comment on the overall numbers right now. But as of last year, the numbers had gone up compared to previous years, and I'm sure that this year also it will go up. Or just Yes. to win? I like to participate. आप लोग भी पार्टिसिपेट किया? आप दोनों से कैसा लगा पार्टिसिपेट? अच्छा लगा। अच्छा लगता है? I'm from Sikkim, Gangtok सिक्किम। बहुत अच्छा लगा तवांग। हमारे जैसा ये सिक्किम की तरह ही है। हम सिक्किम से आया है, बहुत अच्छा लगा। Today I think I will secure in the first position of the 50 plus. I'm from Meghalaya Police. My timing today is 47 sir. Because I hope I am Meghalaya sir? Yeah, same. It was very tough. The terrain is very horrible. While going is good, down. While coming, exhausted. Yeah, That from also Meghalaya. hilly area, but this is different. Yeah, it's very much different. Very beautiful. Very beautiful. yes sir. Thank you so much.
My husband. This is my first time from here, Tawang. So yeah, it's very beautiful, and after 2 kilometers, very top hillside. Thank you so much. Okay, we are my husband. Yeah. हमारी 106 फील्ड वर्कशॉप है। कैसा लगा? ये दौड़ के हमको बहुत अच्छा लगा है। सुबह सुबह पहाड़ों में ठंडी ठंडी हवा है, बहुत मजा आया दौड़ने में। आर्मी के पार्टिसिपेट करके कैसा लगा? बहुत अच्छा था। फुटबॉल को लेके इस मैराथन के बारे में, ये तीसरा साल है। यस, ऑफ कोर्स बेनिफिट मिलता है क्योंकि यहाँ ऑल ओवर इंडिया से भी आते हैं, कुछ विदेशी लोग भी आते हैं, इसलिए टूरिज़्म को तो अच्छा खासा प्रमोट मिल जाता है। एक्टिव रहना ज़रूरी है। आजकल बेकार का ड्रग्स लेके अपने हेल्थ को नुकसान पहुंचाने से कुछ अच्छा तो होता नहीं है। अपने फैमिली को भी आप दुख पहुंचाओगे, अपने शरीर को भी आप नुकसान पहुंचाओगे। इसलिए एक्टिव रहना है, स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट करना है, वही मैसेज देना चाहूँगी। मैं ये दूसरा साल है मेरा। लड़कियों को भी मैं सेम ही मैसेज देना चाहूँगी कि उनको भी एक्टिव रहना चाहिए, उनको भी फिजिकली फिट रहना चाहिए, एक्सरसाइज करना, सुबह जल्दी उठना, जल्दी सोना, ये सब। बहुत अच्छा लगा। फर्स्ट आता हूँ 5 किलोमीटर्स में दौड़ा। सबसे पहले तो हेल्थ ठीक रहेगा और टूरिज्म भी आने लगा, बाहर से आके पार्टिसिपेट करेगा, उसके लिए भी बहुत अच्छा रहेगा। आर्मी सर 10 किलोमीटर। यस सर। कैसा लगा सर? सर बड़ा टफ था कि अगर आप हर साल करेंगे तो जनरेशन को बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। थैंक यू सर। Yes, very much. Already Tawang is a tourist hotspot. It's a tourist destination, and with the coming of this international event, Tawang Marathon 3.0, I think it has only enhanced the popularity of Tawang as such. And besides tourism, it has also promoted the spirit of sportsmanship, and I think also the weather has been quite supportive. So we have seen quite an increase in numbers of tourist flow. So it has definitely enhanced the tourism sector. As she said, और जैसा हम सब जानते हैं कि दिस इज़ वन ऑफ द हॉटस्पॉट एज फार एज टूरिज्म इज़ कंसर्न। सो विथ रिगार्ड टू द फर्स्ट एडिशन ऑलमोस्ट शायद 3000 था हमारा पार्टिसिपेंट्स ना, एंड दिस टाइम वी आर टोल्ड दैट इट हैज़ टच्ड 6000। जी। तो या सो देयर इज एन इनक्रेडिबल जंप ना। आई थिंक द रनर्स का जोश जो है वो तो बरकरार है। ऑफ कोर्स अगर डिग्निटरीज आते तो दिस वुड हैव एडेड more charm to the event. However, I think the spirit is on, and the ground level workers and all the stakeholders have been into it for the past 3 months. So despite whatever the pre-engagements that our honorable dignitaries had, but I think the spirit is there, and it has been and it is still sending a very strong message of not only promoting tourism sector but also, as you said, the fight against drug menace, a message against drug menace, and also instilling a sense of sportsmanship among youth especially. This has been organized by Sirens, as we all know, in collaboration with district administration and also Indian Army, and as we can see, it is all for us to see the presence and the efforts of Army is very much there. And this has always been a benchmark for Tawang, the bonhomie between district administration, locals and Indian Army. Yeah. I am Wangmu Sange Wangmu Musobi. So we are here at Tawang near Indo-Chin border of Arunachal Pradesh, and this is the 3rd edition of Tawang International Marathon. More than 6,000 participants from all over India and different countries also. They came here to participate in this Tawang Marathon, and the Indian Army along with the government of Arunachal Pradesh, they are organizing this Tawang Marathon, where participants above 60 years, 70 years also, and women from different sections of the society and girls also, they are participating. Indian Army is also participating. ये दौड़ते रहते हैं हमेशा ना? हाँ सर, दौड़ते रहते हैं। क्या मैसेज जाता है सर? मोटिवेट होते हैं सर, फिट रहने का मैसेज जाता है, हेल्थी एंड फिट होने का। APJD से आए हम लोग। हाँ, हम सारे बंदे साथ हैं। हम जहाँ ये देखिए आर्मी के जवान हैं यहाँ पे जो इस रैली में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, ये मैराथन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। पूरे हिंदुस्तान से लोग आते हैं और यही पार्टिसिपेट, ये मैसेज देने के लिए। तवांग की ये 3rd एडिशन
तवांग मैराथन है। यहाँ पे 6000 से भी ज़्यादा पार्टिसिपेंट्स आए, अलग अलग देशों से भी आए। तवांग इंटरनेशनल मैराथन है ये देने के लिए, और ड्रग्स फ्री अरुणाचल प्रदेश को इंडियन आर्मी के द्वारा ऑर्गेनाइज किया गया। स्टेट की जो गवर्नमेंट है उन्होंने सपोर्ट किया। अरुणाचल के जो एमएलए, तवांग के एमएलए हैं नामगे सेरिंग, उन्होंने कहा कि चीफ मिनिस्टर के सहयोग से इस तवांग मैराथन को आयोजित किया गया। 3rd एडिशन है ये, पिछले साल भी हुई थी। 6000 से भी ज़्यादा पार्टिसिपेंट्स आए। आप मेरे पीछे देखिए, आर्मी के जवान हैं यहाँ पे। काफ़ी सुंदर तवांग मोनेस्ट्री है। तवांग मोनेस्ट्री को लोग देखने आते हैं। यहाँ तवांग में इंडो चीन बॉर्डर के पास तवांग है, बुमला बॉर्डर को लोग देखने आते हैं। लोकल एमएलए, मैं आप सबको स्वागत करना चाहता हूँ और मैं बेस्ट विशेष देना चाहता हूँ। और मैं अरुणाचल सरकार के हमारे युवा मुख्यमंत्री श्री पेमा खांडू जी को मैं आपके माध्यम से मैं उनको धन्यवाद देना चाहूँगा, और इंडियन आर्मी को और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को। इस इनिशिएटिव से हमारा यहाँ टूरिज़्म सेक्टर में काफ़ी बढ़ोतरी हुआ है। तो इसको चलते इस बार का ये इस मैराथन का थीम है कि स्ट्राइड फॉर आपका सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड क्लीन तवांग, ग्रीन तवांग। तो हम सबको मिलके हमारा तवांग को साफ सफाई रखना है, और इसके अलावा भी पूरा भारतवर्ष में पूरा प्लास्टिक फ्री रखना है, साफ सफाई रखना है। तो ड्रग्स फ्री को लेके आपका मैसेज जाएगा इससे? हाँ जी, ड्रग्स फ्री। हाँ बिल्कुल, ड्रग्स फ्री होना है। मैं तो इसके ऊपर में काफ़ी काम कर रहा हूँ, और मैं सभी से ये उम्मीद करूँगा कि जागरूकता हो, सब मतलब ड्रग्स से दूर रहे। मैं ये नौजवान युवा पीढ़ी से यही मैं उम्मीद। Like all marathons, this is for instilling the spirit of cooperation, sportsmanship, and especially this year we have the theme of Stride for Sustainability, which gives the message of a sustainable environment, promoting a sustainable environment in Tawang, and ensuring that all the events that take place, starting with this marathon, they are plastic free and held in a sustainable manner. So that is the main message this year as far as the theme goes. This is just one way of increasing tourists that come for sports purposes, or sports persons who are interested in running in high altitude areas also. But overall, more than 6,000 have registered from all over the country. Enjoy the run in the beautiful place. That all aspects have got some or the other strategic, relationship importance. Tawang as a town, like I just mentioned, is strategically very important. The country is seized of this particular fact, not today, but ever since, the time that we all remember. Now, Indian Army, as a main stakeholder in the aspect of ensuring territorial integrity and national security, is deeply invested in the area of Tawang and the frontier areas, the border areas. Events that have taken place over the last about a year and a half in this particular area have been absolutely normal. The understanding between the two sides, because whether you're neighbors or you are members in the family, the understanding between the sides is extremely important. At the moment, we are passing through a very, very good understanding between the two sides. There are certain agreements, there are certain protocols which guide our relationships in the forward areas as also at the national level. So both the countries, both the forces are committed to maintaining the protocols and abiding by the agreements that have been reached in the two countries. So I would say that the situation in this part of the border is extremely cordial as of now. Challenges will always remain when you have borders with neighbors and borders with have certain histories associated. So those kind of challenges remain, and I'm sure the highest engagement that is taking place at the national level between the highest national leadership as also the military leadership between the two countries will definitely come to a solution in the years ahead, and we are maintaining a very, very solid defensive posture in the area. We are ready for any eventuality at any point in time. So to the nation and to the citizens of the country, I would only like to assure that your army and your armed forces are doing a very good job in terms of ensuring the territorial integrity and the mandate that has been given to us by the country.
So rest assured, Indian Army is strong. It is strongly deployed in this area, as also the adjoining areas in Arunachal Pradesh. So it's a reason for a state of happiness in amongst all of us, for us to be assured that everything is good with the armed forces and also in the frontier areas of Tawang. I just want to ask one question. So, during the time of Operation Sindhu, we have seen it's a very big part of Eastern Command. So, sir, what role does Eastern Command play, and what all challenges does Operation during the time of Operation Sindhu Eastern Command faces? Well, like you're aware, Operation Sindoor was largely limited to whatever is happening on the Western Front. So not on the northern borders. You are aware that whenever such situations are faced by a nation, the entire armed forces of that nation come into a degree of readiness and alert. So like the Western border was since activated, and there were operations being conducted. Eastern Command in its own right was also supporting the efforts of the Western borders, and while also maintaining the aspect of high alert in our own respective areas in the Eastern Theatre. About Op Sindoor, the only thing that the country has to know is that it was a tremendous success which is known to all of us. And this particular aspect and the emotion has been shared by the countrymen, with the countrymen, by the highest leadership. We have entire details of the operations which are hosted on the MOD sites as also the PIB sites. There have been extensive interface wherein armed forces and higher leadership of the country have on numerous occasions given out the aspects as to how the entire operation was carried out with the amount of success. Sometimes relationship between countries are like marathons only. Sometimes they are easy to begin, but they take a long time to finish, like a marathon also. So you would see that the way that India went about dealing with the business of Op Sindoor, they started it and they finished it at their own time of choosing. When they had their objectives met, soon enough, within about a time of just about 4 days, they were able to meet the objectives to their satisfaction, and the nation took a call that, okay, fine, we stop at this and see as to how it evolves in the future. And let me assure you that our readiness as a country, as the armed forces of the country, continues unabated, and we are ready for any eventuality in the future as well. We know that such eventualities we will continue to face on the western borders, and we are always ready. There is no score for any doubt in anybody's mind towards that. जितने भी फोर्सेस हैं देश के, चाहे वो सेंट्रल फोर्सेस हैं, चाहे वो अपने आर्म्ड फोर्सेस हैं, उन सब का कंट्रीब्यूशन इज ग्रेट. Insofar as participation and results is concerned, you know for yourself, right from those, a very, very long time. We've had Milkha Singh, we've had Dilip Tirki, we've had so many accomplished runners and athletes and sportsmen who have contributed towards the national effort. हाल ही में Lieutenant Colonel Honorary Neeraj Chopra, आपने सुना होगा सर, he's been given the honorary rank of a Lieutenant Colonel in the TA by none less than our Honorable Raksha Mantri, just 4 days back. So इस तरीके के जो प्रोत्साहन है, फिर हमारे पास अविनाश सावले हैं जो 3000 मीटर स्टीपल चेस में साउथ कोरिया में गोल्ड मेडल लेके आए हैं. और ये एक स्टोरी यही नहीं खत्म हो जाती, ये स्टोरी तो अभी लिखना शुरू हुई है. अभी हम यहाँ के बाद कहाँ पहुँचेंगे इस एफर्ट के साथ, ये एनीबॉडीज इमेजिनेशन. So we will hold it here. आगे आ जाए और यहाँ पे जो लोग खड़े हैं 5 किलोमीटर के और 10 किलोमीटर वो थोड़ा पीछे हट के थोड़ी जगह. Please come quickly. We are going to start the race in the next 9 minutes. So